बॉलीवुड की दुनिया में इस हफ्ते क्या सनसनी हुई है, इसके लिए मैं और प्रथमेश आपके सामने आ रहे हैं गपशप सीरियसली में प्रस्तुत करने के लिए इस हफ्ते में क्या हुआ है। तो प्रथमेश, आई थिंक लव सबसे योर पहले हिंदी क्या ब्रो, हो रहा है? लव योर हिंदी। ओके। बहुत सारी ढेर सारी चीजें होती रहती है बॉलीवुड में। आप सुनाए, हम आप कौन सा क्रम रखेंगे हम इस सेगमेंट में? वाओ, यू जी। डेफिनेटली हैड योर कॉफी दिस मॉर्निंग। सो अनुपम खेर जो हैं, ही डिस्कवर्ड दैट देयर आर दीज करेंसी नोट्स which instead of having Gandhiji's photograph, and we are shooting this on Gandhi Jayanti 2nd October, instead of having Gandhiji's photograph, they had Anupam Kherji's photograph, which is why he used that on phrase the currency on the note. currency note, on the currency note, which is why he used that phrase kuch bhi ho sakta hai, which is also the name of his famous one act theatre play which he's been performing for so many years. Apparently there was some business dealing which was taking place in Ahmedabad, and this businessman discovered कि जो currency notes दिए हुए हैं उनमें अनुपम खेर जी के फोटोग्राफ है. Of course, when Anupam Kher found out about this, he's posted about it on his Trust me bro, if I was Instagram. that businessman, I wouldn't even know, क्योंकि इतनी striking similarity, and I'm not just talking about his bald head, but I think Mr. Kher should be happy about it, because not just facial similarity, somebody is watching you through the lens of Mr. Gandhi, can perhaps perhaps land him a role or two. He did play Gandhi in his film Maine Gandhi Ko Nahi Mara, if you remember, where he plays a schizophrenic, and where he gets into this mental zone where he starts seeing himself. उनको ऐसे आभास होने लगता है कि वो गांधी हैं या उन्होंने गांधी को नहीं मारा. आई लव दैट फिल्म. व्हेन आई वॉच्ड इट बैक इन द डे, आई डोंट रिमेंबर द स्टोरी लाइन, बट यस, he wasn't Gandhi in the thing, but yeah, मैंने गांधी को नहीं मारा. It is about the fact that even I haven't seen the film. It I have was seen the released in film. I loved it. 2008 and all. I don't remember the story. But very interestingly named title, of course. Yes, of course, we are not talking about the film. लेकिन जो similarities है वो काफी ज्यादा, मुझे लगता है Mr. Kher should be happy and delighted. I'm sure he is. I'm sure he is. Definitely it's a compliment. कोई उस लेंस में देख रहा है और शायद वहां से कोई ना कोई उनके लिए रोल लिख ले गांधी प्ले करने के लिए. नहीं, रोल्स तो उनके पास काफी है. The fun side of the story. रोल्स तो ऑफ कोर्स उनके पास काफी है. इनफैक्ट Z5 पे इनका वो द सिग्नेचर अभी रिलीज हो रहा है. इमरजेंसी रिलीज होने वाली है. इमरजेंसी, हाँ, कब रिलीज होने वाली है पता नहीं है, बिकॉज वो कट्स हुए हैं काफी. देन द डेट्स हैव बीन पोस्टपोन्ड एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आई वुड से क्वाइट एन इवेंटफुल लाइफ फॉर मिस्टर खेर. सो मूवीज हैं, वेब सीरीज है, और प्लस करेंसी नोट पर भी इंस्टेड ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी वी सी अनुपम खेर. आई डोंट नो व्हाट टू से, व्हाट टू मेक ऑफ दिस स्टोरी. क्वाइट एन अचीवमेंट, आई वुड से. एक और चीज मैंने जो पढ़ी थी, राजेश कुमार, हु इज नोन एज रोशेश फ्रॉम साराभाई वर्सेस साराभाई, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला टू सिद्धार्थ करन ऑन सिद्धार्थ करन पॉडकास्ट दैट ही वाज सेलिंग वेजिटेबल्स आउटसाइड हिज सन्स स्कूल, which is something so surprising, because when you think about Roshesh and Sarabhai versus Sarabhai, you're like, obviously all the people who worked over there, they earned a lot of money. वो सीरियल कितनी देर से चला है, so they must be so financially secure. फिर उसके बारे में हमने पढ़ा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ ब्रेक लिया था कुछ सालों के लिए, एंड ही वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन फार्मिंग बिजनेस. ब्रेक लिया था एक्टिंग से, एंड ही वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन फार्मिंग बिजनेस, एंड दिस कैरीड ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. उसके लिए उन्होंने अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबसे पैसे लिए, बट दैट बिजनेस that startup did not work out as planned, and he lost a lot of money on the accounts of, I think, 1.5 to 2 crores maybe. And he wasn't earning also enough. I think 70,000 or something like that per month he was earning through his venture, to the extent that he owed a lot of people money. The business had failed, and he started selling vegetables outside his son's school, which is I mean, very sad. That's unfortunate. quite something. And of course none of us really knew about it until he spoken about it. Also reflective of the industry we work in, Kabir. Media, films, television, it is so uncertain. आप देखिए, रोशेश साराभाई इतना, मतलब घर में पहुंचा हुआ किरदार है. ऐसा कौन सा शख्स होगा, अगर उसने साराभाई वर्सेस साराभाई देखी है, जो रोशेश को नहीं पहचानता. So from that fame, you are not getting any other role, you are not getting films, you are not getting television shows, and then things go from bad to worse to the extent that you have to sell vegetables outside a school, which is very very unfortunate. कोई धंधा छोटा नहीं होता, कोई भी business छोटा नहीं होता, but it also goes to show the stark reality of the business we work in, which is a media. So tomorrow you could be famous, day after tomorrow you may not have anything
to fall back on. Monday you might be famous, on Thursday you might be selling Loki on the street. Because everybody is not Shah Rukh Khan. Na? People watch the dream of Shah Rukh Khan or Salman Khan, megastar Akshay Kumar, and they come to Bombay and they think everything is hunky dory. But you got to see the shelf life also of a star. कि आप साराभाई वर्सेस साराभाई बड़ा सीरीज था, ऐसा नहीं. आई डू नॉट नो द पे स्केल, बट उसके बाद जो आपको फेम मिलता है, उसके बाद शायद आपको इवेंट्स भी मिलते हैं, आपको बुलाया जाता है, आपको एंडोर्समेंट डील्स भी मिलती है. हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स रोशेश साराभाई वो सुपरस्टार की कहीं भी इर्द गिर्द नहीं है, बट वेरी वेरी पॉपुलर कैरेक्टर. हैविंग सेड दैट, कहीं ना कहीं अलग आपके पास एवेन्यूज़ होते हैं जहाँ से आपके पास पैसे आते हैं. आप इवेंट अटेंड करते हो, आप वेडिंग्स अटेंड करते हो, हर टू ईच जोन. लेकिन ये भी दर्शाता है कि फेम मिले तो ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ पैसा भी आए. करेक्ट. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. आई होप ही बाउंसेस बैक. ही इज क्वाइट अ कैरेक्टर. Full of beans. He's mentioned that full of beans. Kota Factory Part 2 also, he's got a role now that he's back into acting and he's getting other roles also. And you have to look at the period in which he was working. He got that fame. तभी टेलीविजन था और टेलीविजन के बाद फिल्में ही थी. So if you are a television actor, you don't get a red carpet treatment in films, right? और फिर टेलीविजन भी इतना लिमिटेड है. और अब जब वेब सीरीज का बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, नाउ यू हैव मेनी एवेन्यूज एंड यू हैव मेनी प्रोजेक्ट्स. लेकिन बात ये भी है कि आपको कौन सा रोल मिले, कितना उसमें पैसा मिले, उस प्रोजेक्ट में कितना पैसा है. तो ये सारी गणित है भाई, ये सारी कैलकुलेशंस वन हैज़ टू कीप इन माइंड and got to know the stark reality of the world of entertainment. He's also mentioned that he took inspiration from Amitabh Bachchan when he heard about Mr. Bachchan's story, that when he was going through a rough phase, post the failure of ABCL, just before KBC, just before Mohabbatein, when he owed a lot of money to people, and then of course he got KBC and he got that role in Mohabbatein, and sort of bounced back after that into Bollywood and with so many advertisements. So he said that he also mentioned in the podcast that I also wanted my sons, friends and everybody to know that there is no job which is small enough. Correct. Right, the fact that he's selling vegetables and all, to sort of make them learn a lesson about that. Absolutely. But having said that, again, the story that we look at, and I don't want to sound cynical about it, but again, the story that you pick to look up to is Mr. Bachchan's. You cannot forget the fact that Mr. Bachchan के पास जो बैंक था in terms of creativity, in terms of films, he is the Mr. Bachchan. So bounce back, of course, किसी के लिए भी difficult होगा, but there is that much body of work to fall back upon. There is that much level of contact and networking. Of course, Mr. Bachchan had to knock on Mr. Yash Chopra's door. Then he got Mohabbatein, he got KBC happened, and then there was no way to look back. I mean. लेकिन सबके साथ ये हो ज़रूरी नहीं है ना. जस्ट बिकॉज यू आर एन एक्टर एंड यू हैव स्ट्रगल, अगेन यू गो डाउन द पाथ दैट मिस्टर बच्चन हैड टू वॉक डाउन. ये ऐसा होगा नहीं है, ये होता भी नहीं है. सो ऐसे एक इंस्पिरेशन लेना अलग बात है, और ये सोचना कि मेरे साथ भी एग्जैक्टली वैसा हो सकता है, इट्स क्वाइट absurd and absolutely unrealistic. No, he's taking inspiration. He's not saying that मेरे साथ भी वैसा होएगा. For every Amitabh Bachchan, there is also a Rajesh Khanna who couldn't bounce back. Yeah, right? Exactly. He gave 15 hit films in one go, which has never been able to repeat itself with any other actor, and then of course the downfall happened. Yeah. So I mean, it's inspiration. Now whether he succeeds or not, that is a different story. But वो तो है ही. अब now from लौकी की सब्जी and भिंडी दो प्याजा to सांप and sapera, I don't know if you saw the photograph वो जो event में भूमि पेडनेकर yes, had dressed up as I watched it. What had she dressed up as? It was basically a dress and there were these two snakes. Of course, the video editor will put up the photograph for us to see, and there were all kind of comments, quite some pretty creative comments. Somebody as also, the netizens somebody said it's a baby incubator. Somebody called it a baby incubator, and that's not a wrong assessment. Bhumi, what are you doing, Bhumi? We love you. We love you, the actor that you are. We loved you in Dam Laga Ke Aisha. We like you even better in Bhakshak. She's a brilliant actor. She is. She's got the acting chops. Why is she walking down the path where fashion takes precedence over acting jobs is beyond me. और ये I understand there is tremendous pressure on these actresses. They got to look a certain way. They got to look modern and trendy and fashionable. You got to look like you're in vogue. But आपको ये नहीं भूलना चाहिए आपकी strength क्या है. I am nowhere. Kabir, I'm not here
to deliver a lecture on morality. I'm not here to deliver lecture on image consultancy. But having said that, भूमि की strength है acting. भूमि की strength है the honesty of her performance. भूमि की strength ये भी है she looks more like one of us. Then why walk down the path where you suddenly position yourself like a fashionista? You want to look like, I may be wrong here, but the way I see these images, that you want to look like the next Priyanka Chopra or something. I understand the pressure is immense because you got to look glamorous in all these events. You got to look glamorous in all these, the cover of the glossies, the magazines. You got to look desirable while you endorse all these products. That pressure is immense. So I understand you got to be an actor also, but beyond that you have to have an image which works for you in the commercial space. But having said that, Bhumi got to know what her strengths are, which in my opinion is acting and the honesty of her performance. And then when you get into the space where your dresses and what you wear and what you do on the red carpet at the event gets scrutinized and discussed more than your acting and the projects you do and your performances, then it becomes a sad scenario. I genuinely feel that she had actually worn that dress to go to a fancy dress competition, which probably got cancelled, and then she had to go to the event. Or maybe this is a teaser that dress is outrageous even for that standard, even by that standard. Or maybe it was a teaser for an upcoming movie where she is playing the sidekick to Nagraj or something like that, or she is playing the main role of Nagraj. Who knows? So yeah, we'll she did put it up on her Instagram. Yeah. Maybe she'll take it off later. We don't know. But yeah, your point is taken regarding the fashion sense and all. But yeah, there's a lot of pressure also. Different stylists and fashion designers and. Sorry to say, I mean, we're talking about Bhumi. I mean, here is Rajkumar Rao, who's known for delivering performances like, but then we see the chin growing somewhere. We see some outrageous choices in terms of clothing as well. See, it is absolutely stupid to criticize everything and to be vocal about everything. But we are in the business of the media, and these scenes are seen and commented upon. People like Rajkumar Rao, people like Bhumi Pednekar, guys, focus on your craft. You are brilliant at what you do. On your fashion game, you can be 1 or 2 out of 5, but as long as you stay course and as long as you impress us, wow us with the kind of performances that you are known for delivering, just stick to that, guys and girls. Talking about the craft, a lot of news has been coming up regarding Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. A lot of different cast members have been speaking of. The most recent यार one. इनके तो ना मसले खत्म ही नहीं हो रहे कभी. हाँ, मतलब एक के बाद एक ये कैरेक्टर कुछ कह बैठता है कि मेरा क्रिएटिव डिफरेंस था, दूसरा कह बैठता है कि मेरे पास क्रिएटिव लिबर्टी नहीं थी, तीसरा बोलता है कि मेरे पास मेरे साथ छेड़खानी हुई थी. इनके तो मसले खत्म ही नहीं हो रहे. And the interesting part about this is that first when we used to talk about Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, it was only 2 things. A, one of the most widely seen comedy series, and unka TRP itna high and they're doing so well. Now over the last maybe I think 1 to 2 years, there have been a lot of these controversial topics which have come up. The most recent one being where the actress says that I think a lot of her dues have not been paid, 21 lakhs or something. And also one of the makers told her that I think she was not feeling well, she wanted to take leave for some time because she was having anxiety, she was physically not well and she wanted leave. But then she was also, I think the maker gave the example that you're doing these brand endorsements also and said something like हम overnight आपका Instagram भी उड़ा सकते हैं. वैसा उन्होंने accuse किया है. Allegedly that is what she said, that the maker said कि हम आपका Instagram उड़ा देंगे. तो क्या थ्रेट है ना कबीर, मतलब मैं आपको इस प्रोजेक्ट से निकाल रहा हूँ, आपका पे स्केल घटा रहा हूँ, ये सब भूल जाओ, मैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ही उड़ा रहा हूँ. Which is, and that is because nowadays so much of the payment, so much of the money which is made by, of course, influencers and actors and celebrities and models is through Instagram. So that is a pretty valid threat. Yeah, absolutely. क्योंकि आपकी रोजी रोटी इंस्टाग्राम बन जाती है. कई ऐसे एक्टर हैं, मैंने अभी भी सुना कि उनका प्रोफाइल ही वहाँ से चेक हो रहा है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, एज अपोज टू आपकी एक्टिंग कितनी अच्छी है. And accordingly they get their role. And accordingly they get their role. So if your Instagram account is no more, what it means is that your portfolio is no more. आपका जो एग्जिस्टेंस है कास्टिंग डायरेक्टर के इर्द गिर्द वही नहीं है, वही उड़ा दिया तो क्या ही बात होगी. लेकिन ये थोड़ा सा अब्सर्ड है, मतलब इस लेवल पर लोग आते हैं कि बोल रहे हैं कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा देंगे, मतलब थ्रेट ऑफ दैट लेवल. या
मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस और कॉन्टैक्ट्स होंगे क्लियरली अगर ये कर सकते हैं। थ्रेड्स के बारे में बात कर रहे हो तो ऑनलाइन में एक वो मसला हुआ था वेयर आई थिंक KRK हैड क्रिटिसाइज गुरु रंधावा। उनकी कोई पिक्चर आ रही है तो उसको क्रिटिसाइज किया था, वही 2 रुपीज़ पीपल जो उनका इतने 10 साल से चल रहा है वो कमेंट 2 रुपी पर्सन 2 रुपी पीपल एंड फिर गुरु रंधावा हैज़ एक्चुअली रिप्लाइड। नॉर्मली पीपल डू नॉट रिप्लाई टू KRK when he says something because he criticizes celebrities from A to Z. In this case Guru Randhawa has actually said, I think उन्होंने बोला कि आप बड़े भाई के जैसे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। नहीं, माफ़ नहीं किया। और फिर वो दिन KRK ने फिर से रिप्लाई किया, फिर गुरु रंधावा ने रिप्लाई किया और बोला कि लगता है आपकी आप कभी किसी पंजाबी से नहीं भिड़े हैं। ओके, सेइंग कि भाई आप मत ही भिड़ो क्योंकि फिर देन आई कैन ऑल्सो से थिंग्स और आई कैन ऑल्सो सॉर्ट ऑफ डू थिंग्स एंड ऑल। एंड KRK ऑफ कोर्स इज कॉलिंग हिमसेल्फ क्या, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिटिक, व्हिच इज अगेन इट वुड बी नाइस इफ सो मेनी ऑफ अस हैड सिमिलर लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंस, misplaced though it might be, but still that's what happened. Did you see these tweets? I think there is no point. I mean, Guru Randhawa इस पर टिप्पणी क्यों दे रहे हैं, ये मेरा अरे ठीक है सवाल है। ठीक है तो कोई कर रहा है तो कमेंट कर रहे हैं ना, क्या हुआ? देखो मतलब देखो KRK being KRK, वो तो अमिताभ बच्चन को भी नहीं छोड़ते, उनके ऊपर भी कुछ तो टिप्पणी होगा, मतलब उनके साथ अच्छी दोस्ती है। लेकिन अगर उनकी फिल्म की टिप्पणी के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी KRK बोल देंगे बेबाक होकर। तो अगर कोई बोल रहा है और उसका ओपिनियन है, हर ओपिनियन को आप बढ़ावा दोगे तो इट स्नोबॉल्स इनटू समथिंग बिग। और जो ओपिनियन दे रहा है उसको आप बहुत ज़्यादा 2 रुपी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा कर रहे हो। सो बेटर कीप योर माउथ शट एंड मूव ऑन। अरे ठीक है यार, अब वो बी कीप योर माउथ शट, अब कितना आदमी कीप योर माउथ शट करेगा, कभी कभी तो वो बोलना पड़ता है ना। तो ठीक है, जो आईफा अवार्ड्स अभी हुआ है, ठीक है, आईफा अवार्ड्स में एनिमल गॉट द बेस्ट फिल्म। मुझे ये बात समझ नहीं आती है दैट व्हेन एनिमल केम आउट Sandeep was criticized like anything. Sandeep Reddy Vanga, the director. Sandeep Vanga Reddy, the director. But now when Animal has got the best film, right? So the people who've chosen this as the best film, that criticism is not there. Only the director is being criticized for what he's done. But these are also enabling voices, na? I am not for or against the film Animal. This is just an observation from my side that it's got the best film, right? So then, I mean, where are the voices? Where the board of contention is? Where are the voices criticizing this movie? That how can you choose Animal as the best movie when you're going hammer and tongs against the director, right? Then why not? Why aren't there any voices going hammer and tongs against this? Complete silence. In fact, Shah Rukh also said that. I think he said that I want to work with you, Sandeep. He also said something like that. So now there are no voices, etc. I suspect and I believe दैट अभी लोगों को पता चल गया कितना भी आप आवाज़ करो, शोरगुल मचाओ, एक बार ऑडियंस ने डिसाइड किया कि ये फिल्म मुझे पसंद आई। मैं बता रहा हूँ, अगर एक बड़े स्केल पर, लार्जर स्केल पर अगर ऑडियंस बोलती है कि मुझे ये फिल्म पसंद आ गई, जो कि अनडाउटेडली लोगों को पसंद आ गई, बॉक्स ऑफिस देखिए, फिल्म का पब्लिसिटी देखिए, तो उसके बाद अब कोई शक ही नहीं बचा ना। वो ठीक है, that I agree with. I'm just saying that there's a level of hypocrisy when you are only targeting the director and not targeting all of these things. These are also enabling points, right? So then why aren't these things being targeted? So why? Absolutely. तब क्या होता है जब फिल्म नहीं क्या होता है जब फिल्म नहीं आई है अभी recently out and it is making so much noise in terms of its controversy, in terms of the subject matter that is being discussed. तो बहती गंगा में सबको हाथ धोना है कि मुझे भी बोलना है इसके बारे में, कुछ भी फेमिनिज्म नहीं दिखाया, फीमेल को अच्छी तरह से पोर्ट्रे नहीं किया, देयर इज सो मच वायलेंस इन द फिल्म, इररेस्पेक्टिव ऑफ द जॉनरा टू विच द डायरेक्टर इज टेकिंग व्हाट ही वांट्स टू शो, दैट्स हिज प्रेरोगेटिव, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू इज द हिपोक्रेसी ऑफ इट। जब फिल्म आ रही थी, जब उसकी आवाज़ कर रही थी, तो हर किसी ने सोचा मैं इसके बारे में बोल दूँ, मेरी एक टिप्पणी होनी चाहिए, मेरा एक ओपिनियन होना चाहिए, विच इज़ ओके। नाउ दैट द फिल्म हैज़ बैक द अवार्ड, इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि इतने सारे लोगों ने फिल्म पसंद की, बॉक्स ऑफिस पर भी चली, इतना पैसा कमाया, इतने लेवल पर उसका प्रोजेक्शन हुआ और इतने लोगों को पसंद आई। तो जब ये होता है तो आपको अवार्ड मिलना लाजमी है, और एक बार आपको अवार्ड मिल गया तो सारी आवाज़ें शांत। उस टाइम भी था बॉक्स ऑफिस में उसको बहुत पैसे मिले थे, तो उस टाइम एनीवे दैट्स माय पॉइंट। ऑल दिस अवार्ड स्टफ इज फाइन, बट माय पॉइंट इज दैट इट्स ओनली बीइंग टारगेटेड टुवर्ड्स वन पर्सन, दैट्स हिपोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मी। एब्सोल्युटली। Coming to the last topic and probably the most news-making topic of this week is Govinda. Apparently, from what we know, around 4:30 am वो उनका जो licensed gun है वो उसको clean कर रहे थे,
और क्लीन करते वक्त वो गन लोडेड भी था, तो he ended up shooting himself in the knee and then उनको he was Now they say he shot himself in the toe. knee or toe, whatever, leg. Let's just settle for the leg. And he was admitted to hospital. Of course, Krishna and his wife Tina and his daughter have said that now he's safe and out of trouble. But yeah, I think probably cleaning your gun at some point of time. Of course, there were a lot of memes also which freaking went around, like अखियों से गोली मारे, playing on that famous song of his. एंड मुझे गोली लगी तो मैं क्या करूँ, ऑल दोज थिंग्स, वो तो इंटरनेट में नेटिजन्स में होता ही है. बट द गुड पार्ट इज दैट वन इज एक्चुअली हैप्पी दैट ही इज सेफ एंड इट डिडंट lead to anything more or lead to a much more serious injury. And of course somebody like Govinda, we would want to see him in so many much more roles really. Yeah, कभी conjectures will be many and they will be varying कि क्या कर रहे थे, गन क्यों साफ कर रहे थे, ऐसी क्यों लगी कि कुछ नहीं वो ठीक है, वो गन साफ कर रहे थे वो ठीक है, वो उनकी गन साफ कर रहे थे ठीक है. वो the thing is that the fact of the matter is he is sound and he is happy and he is healthy and he is recovering real fast. I hope he comes back and he bounces back even as a movie star that he is. Yeah and आपको क्या लगता है about what all we have spoken about today? अगर आपके कोई विशेष टिप्पणियां हैं तो प्लीज कमेंट इन द यूट्यूब सेक्शन बिलो और इन द इंस्टाग्राम सेक्शन wherever you're seeing this, and we will be back next week with another episode of the podcast. Thank you so much for watching this one.